राज्य विश्वविद्यालय की दृष्टि और रणनीति पर विचार करने के लिए मंगलवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वीसी, प्रो वीसी और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि एक ऐसा रोड मैप बनाएं जो वीसी पदाधिकारी के बदलने से प्रभावित न हो। उन्होंने पूछा कि आप स्वयं अपने बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में दाखिला कराएंगे, यह मानकर कि वह सफल होगा। So in that context, our universities have a very great role to play. Considering this aspect, this workshop is being organized. That's a small backdrop of this workshop. So, on the initiatives, number of things have been initiated with approval of Honorable Chancellor Sir. We are trying to ensure that there is some financial discipline and administrative discipline in the universities. And we are not at all hesitant in even going to the extremely sort of unpalatable steps if required to. समारोह को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि आर्थिक समस्या यूनिवर्सिटी के विकास में नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने उपस्थित प्राचार्य और पदाधिकारी से जेपीएससी को सभी वित्तीय जानकारी देने को कहा कि नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली के लिए गाइडलाइन बनाएंगे। Engage the professors or assistant professor from outside universities on deputation basis, and third is like professor of practice. That is one of the UGC's norm that we are also trying to bring in changes in this 2018 statute. And apart from it, one of the important segment which was missing completely, like for the women employees, there was no child care policy foundation was there, which we are trying to put up this 2018 statutes. Then we see of teachers. We have seen, like many of the universities have not sent proposal to JPSC so far for this promotion. We will make a request to all of you, just please ensure that it should be expedited. We have come to know. मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पैसे लेकर नियुक्ति पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि आपने विश्वविद्यालय में क्या किया यह सोचें। विश्वविद्यालय आपको क्यों याद रखें यह महत्वपूर्ण है। आपकी सभी जायज मांगें पूरी की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि पारदर्शिता जरूरी है, भ्रष्टाचार मुझे बर्दाश्त नहीं। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं। Important to discuss why, what has went wrong. But we must know what went wrong, that has to be rectified. But there is no point in crying about the past, then the future ones also get spoiled. I am not that person. We bulldoze in the past. We have to march forward about the future. That is my ultimate aim. In both, it has been highlighted by our Nitin Kulkarni ji as well as our Purwar ji. That what went wrong, that all has to be rectified. What is the advantage of political leadership is we are author of all but master of none. That is the greatest advantage what a political leadership is always having. But you are not like that. You have to be a master of your subject. Because you are the people who are going to specialize everything. When you specialize everything, then the future generation is safer and the future generation is more talented. न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट।